ओके, नजर आ रही है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Okay, so we are discussing the chromatography as separation of different compounds by using chromatography, and we are discussing the thin layer chromatography. We will discuss basic principles of chromatography and thin layer chromatography. आपको presentation नजर आ रही है सारी? जी सर. Okay, so material used to perform in thin layer chromatography, we will discuss the experimental techniques, its application, as well as we will discuss the advantages and disadvantages. Okay, the basic principle is the sample is dissolved in a volatile solvent. Sample is applied with the help of capillary on the baseline drawn on the solid absorbent, right? Like this one, we have drawn a baseline, right? And we are applied the solvent through by using a capillary in the baseline, right? The plate is dipped in the solvent working as mobile phase. As I have already discussed you in thin layer chromatography, there are always two phases. One is mobile phase and another is stationary phase. SiO2 सिलिका जो इसके ऊपर कोटेड होती है कैपिलरी के ऊपर, ये हमारे पास स्टेशनरी फेस है, ठीक है। और तमाम सॉल्वेंट्स जो हम यूज करते हैं, all solvents which we are using are act as mobile phase. These solvents include polar as well as non-polar. We know, I have already discussed with you that hexane is non-polar in nature, while dichloromethane, ethyl acetate, methanol is polar in nature. In all the solvents, methanol is more polar than any other solvents, right? So the plate which is the plate is dipped into the solvent working as mobile phase, right? We are using a TLC10. We just the plate is dipped in the solvent in TLC10, the solvent which is working as mobile phase. As the mobile phase raises up, the TLC plate by the capillary action, right? You know the capillary action. The components dissolve in the solvents and move up the TLC plate. Suppose you see here. Suppose you have the sample start moving, right? As a solvent move, as this is the solvent, as the solvent move, the sample also start to move towards upward, right? As the mobile phase raises up the TLC plate by capillary action, the components dissolve in the solvents and moves up the TLC plate. In adsorption, separation will occur on the basis of difference in adsorption, preferentially adsorption, right? So the basic principle is in adsorption, separation will occur on the basis of difference in absorption. Weakly adsorbed components will separate first and strongly later on. It means that more polar solvents are strongly absorbed and less polar, more polar components are strongly absorbed and weak polar, less polar components or non-polar components are weakly absorbed, right? So in partition, if the component is soluble in mobile phase, it will move with the solvent and vice versa. The moment of the solute is measured relative to that of the solvent is expressed as the retardation factor, right? So this basically in this technique, in this chromatographic technique, we manipulate the polarity. On the basis of polarity, we are separating different components. We are using different solvents on the basis of polarity. Basically, more polar substances bind strongly to the adsorbent, which is silica, right?
which is a stationary phase, more polar substances bind strongly to the adsorbent and elute slower. जो ज्यादा एड्सॉर्ब होंगे वो इनकी जो इल्यूशन होगी, इल्यूशन मीन मोमेंट ऑफ द सॉल्वेंट और मोमेंट विद द सॉल्वेंट, वो जो कंपोनेंट हमारे सैंपल के अंदर है जो ज्यादा पोलर होंगे वो स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगे और इनकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी. लेस पोलर सब्सटेंस बाइंड वीकली टू द एड्सॉर्बेंट एंड इल्यूट फास्टर, राइट. जो लेस पोलर सब्सटेंसेस हैं क्रोमेटोग्राफी में ये वीकली एड्सॉर्ब होते हैं सिलिका के साथ, और जो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे इनके साथ ये फास्टली इनकी मूवमेंट हो जाएगी टुवर्ड्स अपवर्ड इन thin layer chromatography. The same principle applied in column chromatography, but the movement is towards downward. The only difference is in TLC upward movement होती है और column chromatography में downward movement होती है. ठीक है. The strength of the interaction between the adsorbent and eluting components vary approximately in this order. Suppose salt formation, coordination, then hydrogen bonding, then dipole-dipole moment, then van der Waals reaction. So, basically, less polar, right? Initially, we are using the less polar solvent, और इसके बाद हम more polar solvent की तरफ हम जाते हैं इसमें. सपोज इसमें जो इंटरेक्शन होती है, हमारे पास जो मोबाइल फेस स्टेशनरी फेस है वो हमारे पास सिलिका जेल होती है. इस टीएलसी के ऊपर जो स्टेशनरी फेस होती है वो सिलिका जेल होती है. ठीक है. और सिलिका जेल के साथ हाइड्रोक्सीज सपोज इनके साथ बाइंड कर जाते हैं, तो हमारे पास हमारे सैंपल में अगर हमारे पास पोलर कंपाउंड्स हैं तो पोलर कंपाउंड्स स्ट्रांगली बाइंड होते हैं, एड्सॉर्ब होते हैं स्ट्रांगली. More polar substances bind strongly to the adsorbent and elute slower. ये जो बाइंड कैसे होंगे, ये जो सिलिका है और इसके साथ जो सैंपल है ये स्ट्रांगली बाइंड होंगे. अब ये जो सॉल्वेंट की मूवमेंट होगी वो नीचे से ऊपर होगी, डाउन टू अपवर्ड्स. तो इसके साथ वो कंपाउंड जो स्ट्रांगली बाइंड नहीं है, लेस पोलर सब्सटेंसेस बाइंड वीकली टू द adsorbent and elute faster, और ये तेजी से ऊपर मूव होंगे लेस पोलर कंपाउंड्स. और मोर पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो मोर पोलर सब्सटेंसेस बाइंड स्ट्रांगली टू द एड्सॉर्बेंट एंड इल्यूट स्लोअर. ये जो है इनकी इल्यूशन जो होगी वो स्लो होगी, राइट. चीजें समझ में आ गई. तो अगर हम देखें तो मोमेंट की बात करें तो मोमेंट मोर पोलर कंपाउंड्स की कम होगी और लेस पोलर कंपाउंड्स जो होंगे इनकी मोमेंट जो होगी वो फास्ट होगी. ठीक है. चीजें समझ में आ गई. आपके कंपाउंड के अंदर 2-3 सैंपल्स हैं, एक पोलर है और एक नॉन पोलर कंपाउंड है आपके सैंपल के अंदर. तो जो लेस पोलर है वो जल्दी ऊपर मूव होगा और जो मोर पोलर कंपाउंड है इनकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी. अगेन इट डिपेंड ऑन द सपोज इस तरह से इसकी मूवमेंट होगी, एक जो होगा ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा. जब ये सैंपल हम यहाँ पे लगाते हैं तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा हम मोबाइल फेस यूज कर रहे हैं. अब देख लें, इफ वी विल यूज मोर पोलर एड्सॉर्ब स्ट्रांग एंड सेपरेट वेरी स्लोली, जो हमारे पास कंपाउंड्स इस सैंपल के अंदर हैं ये एड्सॉर्ब स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होंगे इस सिलिका जेल के साथ. एड्सॉर्ब होने की वजह से इनकी मूवमेंट जो टुवर्ड्स अपवर्ड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वो स्लो होगी. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लेस पोलर कंपाउंड्स इन आवर मिक्सचर absorb weakly and separate very fast. Less polar compounds absorb weakly and separate very fast. ठीक है. Now अब कैसे हम इनकी वो डेटा मेजर करते हैं, इसका हम RF वैल्यू निकालते हैं. RF वैल्यू कैसे निकालते हैं? A given compound will always travel a fixed distance relative to the distance travel of the solvent. Suppose हमारे पास ये सैंपल यहीं पे था, ठीक है,
ओरिजिनल प्लेट ये थी हमारे पास, और इसके बाद हमने डेवलप किया जो प्लेट जो हमने डिप किया, और ये हमारे पास सैंपल था। ठीक है, हमने देखा कि टोटल सॉल्वेंट की मूवमेंट जो है यहां तक हुई है। आपको नजर आ रही है ये ऊपर वाली लाइन? हमने यहां पर भी एक लाइन लगा दिया, सॉल्वेंट फ्रंट है, इसको कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट। ओरिजिनल स्पॉट हमारे पास ये था प्लेट के ऊपर, और हमने जो डेवलप प्लेट किए इसमें हमने देखा कि सॉल्वेंट हमने मूव करवाया कंपाउंड्स को, तो डिफरेंट सॉल्वेंट्स में, तो एक कंपाउंड जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड यहाँ पे आ गया, ये दोनों कंपाउंड सेपरेट हो गए। ठीक है, कंपाउंड 1 एंड कंपाउंड 2, और जो सॉल्वेंट है ये यहाँ तक, इसकी जो सॉल्वेंट फ्रंट है वो यहाँ तक है। ठीक है, अब सॉल्वेंट फ्रंट जो है वो यहाँ तक है। अब हम क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। मेजर 22 mm पहले कंपाउंड तक है, और 50 mm जो है कंपाउंड नंबर 2 तक है। ठीक है, अब हम इनकी RF वैल्यू निकालते हैं, जबकि ओवरऑल यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, जहां तक सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई है वो कितना है, 65 mm। जहां तक सॉल्वेंट की मूवमेंट हुई है वो कितना है हमारे पास, 65 mm। while there are two compound mixtures, two compound in mixture, they are separating now on the basis of polarity. So this one is less polar, compound number 2 is less polar than compound number 1, right? If we just try to find out the distance, it is 22 mm, and compound number 2 is 50 mm, while the solvent front जो है from the bottom line, solvent front जो है वो 65 mm है। ठीक है, now we try to find out the RF value. RF value for the compound 1. Distance traveled by this, the ratio is called the RF value and is calculated as follows. This is the ratio between, right? So RF value is equal to distance traveled by the substance divided by distance traveled by the solvent front. And we already know solvent front जो है यहाँ तक इसकी मूवमेंट हुई है solvent की वो 65 mm है, जबकि compound 1 की 22 mm है, compound 2 की 50 mm है। ठीक है, अब हम RF वैल्यू फॉर कंपाउंड 1 हम फाइंड आउट करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड 1 इज 22 mm and distance traveled by the solvent front is 65 mm, so it is 0.34, right? And RF value for compound 2 is 50 distance traveled by the compound 2 is 50, and distance traveled by the solvent front is 65. So RF value for compound 2 is 0.77. Remember, RF value is always 1 or less than 1, right? RF value is never be greater than 1. You remember that. Why? Because we know that distance traveled by the solvent is always greater than distance traveled by the compound, right? Therefore, RF value always less than 1. So in thin layer chromatography, suppose you see here a thin layer chromatography calculation of RF values. Suppose these are different compounds. We have RF value is defined as the distance the center of the spot moved divided by the distance the solvent front, both measured from the origin, right? This is the origin. Suppose there are different compounds, we can also find out different mixtures, also find out easily. For example, we use different mixture. You see here A, B, U, C, D. Okay, so this move from here to here, and this move from here to here, this move from here to here. It means that these two compounds are maybe same compound. These two compounds may be same compounds, right? हम इसको दो कंपाउंड्स आए, ये दोनों एक ही जगह से आइसोलेट हुए हैं, तो इन ये सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। अब इन सब की आप RF वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर RF वैल्यू ऑफ A आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो A हमारे पास कितना है, इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड A इज 2m, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट फ्रंट
सॉल्वेंट फ्रंट का डिस्टेंस कितना है आप देख लें, यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो RF वैल्यू फॉर कंपाउंड A इज 2.0 cm डिवाइड बाय 5.0 cm। तो RF वैल्यू फॉर कंपाउंड A कितना आया? 0.40। इसी तरह से आप कंपाउंड D का आप RF वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप जस्ट इसको देख लें कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कंपाउंड डी का जो डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है? 4 सेंटीमीटर 4 cm divided by distance traveled by the solvent front, which is 5 centimeter 5 cm, right? So इसी तरह से 4.0 cm divided by 5.0 cm, that is 0.80. What will be the unit of RF? RF की क्या यूनिट होगी, कोई बताएगा? मोल पर डी क्यूब सर। क्या होगी? मोल पर डी। RF की RF सर। RF is a ratio, right? There is no unit. RF is a ratio because both units are cancelled to each other. There is a ratio, therefore 0.80 is a ratio. There is no unit, right? Okay. So you can find out RF value like this one. You see here, if you try to find out the RF value of B, you can find out that it is 4.0 and distance traveled by the solvent is 5 cm. And if you want to find out that RF value of compound U, that is 3 centimeter and distance traveled by the solvent is 5. So you just divide it, so you can easily find out it, that is 0.60, right? Similarly you can find out B, right? So material, what are the material we are using for TLC? which कौन कौन से मटेरियल हमें चाहिए होते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के लिए? वी नीड ए ग्लास प्लेट, और हमारे पास या ग्लास प्लेट चाहिए होती है, या हमारे पास थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की हमारे पास शीट्स आते हैं वो चाहिए होते हैं। इसके अलावा एड्जॉर्बेंट्स चाहिए होते हैं। एड्जॉर्बेंट्स चूंकि ऑलरेडी मार्केट में पहले से एड्जॉर्ब करके आपको प्लेट्स मिल जाती हैं जहां पर सिलिका जेल की एड्जॉर्ब होते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये हम खुद भी बना सकते हैं। बना के ऑन फॉर एक्टिवेशन ऑफ प्लेट, इसको ओवन में रख देते हैं इस प्लेट को एक्टिवेट करने के लिए। हम खुद भी बना सकते हैं इसके ऊपर सिलिका जेल कोटेड करके, ठीक है। ये हम गिलास में भी कर सकते हैं या इसकी शीट्स में भी कर सकते हैं। इसके बाद डेवलपिंग चैम्बर, डेवलपिंग चैम्बर में भी TLC टैंक, ठीक है, या एक चैम्बर होता है या एक TLC चैम्बर कहते हैं या इसको TLC टैंक कहते हैं। इसी के अंदर हम सॉल्वेंट रख देते हैं। और इसके साथ मटेरियल जो चाहिए इंपॉर्टेंट, वो हमारे पास मोबाइल फेस है। मोबाइल फेस, इन मोबाइल फेस वी नीड different solvents, maybe hexane, maybe methanol, maybe dichloromethane, ethyl acetate, and maybe other solvents. And a device for applying the adsorbent layer, suppose इसमें स्पेचुला वगैरह इसमें पकड़ने के लिए, पकड़ के इसके अंदर फिक्स करने के लिए आपको कोई वो चाहिए। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द प्रिपेयर प्लेट, ये अगर आप ग्लास प्लेट यूज करते हैं तो इसको प्रॉपर जगह पे आप इसको रख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली वी नीड दिस मटेरियल्स, वन इज ग्लास प्लेट और TLC शीट्स available in market which is already absorbed by silica gel, and we need an on for activation of plate, and we need a developing chamber that is also called a TLC tank, right? We need mobile phase. In stationary phase we know very well these are the adsorbent, maybe silica or alumina. Sometimes we are using alumina plates, right? And in mobile phase we are using different solvents like hexane, methanol, DCM, ethyl acetate, and so on. So I have already discussed with you that hexane is non-polar in nature, while methanol is highest polar in nature, while DCM and ethyl acetate are also polar in nature, but less polar than methanol, right? Material use in TLC, you see here these are the materials
a device for applying the adsorbent layer. If you want to prepare this plate by your own, लेकिन ये मार्केट में ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, what is the chemistry of these adsorbents? If you see the chemistry of these adsorbents, silica gel. A silica gel with an average particle size 15 microgram containing a 13% calcium sulfate binding agent. Basically इसमें क्या होता है, बाइंडिंग एजेंट जो होता है वो कैल्शियम सल्फेट होता है, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा मटेरियल जो होता है वो सिलिका का होता है, SiO2 का. And its application is used in wide range of pharmaceutical test, right? Silica gel G254 डिफरेंट रेंज इसके होते हैं. सिलिका जेल G विथ फ्लोरेसेंट एडिट, इसमें फ्लोरेसेंट भी ऐड किया जाता है ताकि आपको जो नजर आएगा आगे जो है आपको फ्लोरेसेंस इसका शो होगा. सेम एप्लीकेशन विद सिलिका G वेयर विजुअलाइजेशन बी कैरिड आउट अंडर यूवी लाइट, ठीक है. यूवी लाइट सर एक स्टूडेंट बार वेट कर रहे हैं, ये जो है ये थोड़ी सी एडवांस कर रहे हैं, सिलेक्टिंग कर रहे हैं सर. 1 मिनट. इसके बाद एल्यूमिना होती है हमारे पास, एल्यूमिना Al2O3. सिलिका की जगह हम एल्यूमिना भी यूज कर सकते हैं ऐसे एडसॉर्बेंट. इसके अलावा हम सेल्यूलोज का भी बना सकते हैं. सेल्यूलोज पाउडर ऑफ लेस देन 30 माइक्रोमीटर पार्टिकल साइज का भी हम इसके ऊपर हम लगा सकते हैं. इसके ये स्पेशली यूज होता है सेल्यूलोज वाला, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन्स, इनको आप इसके लिए. तो एडसॉर्बेंट बेसिकली हमारे पास या तो सिलिका जेल होती है इस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, या एल्यूमिना होती है, या सेल्यूलोज होता है. ज्यादातर हमारे पास सिलिका जेल हम इस्तेमाल करते हैं फॉर स्पेशल केसेस, अल्कलाइड्स एंड सम स्पेशल कंपाउंड्स लाइक स्ट्राइडल इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्कलाइड्स सेपरेशन. इसके लिए हम एल्यूमिना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. इसके अलावा जो मोबाइल फेस है, TLC सॉल्वेंट्स और सॉल्वेंट सिस्टम, इसको हम मोबाइल फेस कहते हैं. ए सिंगल सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ टू सॉल्वेंट्स कैन वर्क एज मोबाइल फेस इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. हम इसमें सिंगल सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करते हैं या हम डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं. मसलन 10% मेथनॉल इन DCM, डाइक्लोरोमीथेन के अंदर 10% मेथनॉल ऐड करके भी हम डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम हम बना सकते हैं. मुख्तलिफ सॉल्वेंट सिस्टम हम बना सकते हैं. इट डिपेंड ऑन द मिक्सचर विच यू वांट टू सेपरेट. आप कौन सा मिक्सचर सेपरेट करना चाहते हैं, इसके लिए आप इसी के मुताबिक आप सॉल्वेंट सिस्टम बनाते हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम ईथर, जो मोबाइल फेजेस में हमारे पास पेट्रोलियम ईथर है जिसको हम हेक्सेन्स कहते हैं. कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, इसके साथ डाइक्लोरोमीथेन है, ethyl acetate, hexane can be used as mobile phase. The ability of mobile phase is to move up is depend on the polarity itself. अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा कंपाउंड किस वक्त ऊपर मूव करे, ये डिपेंड करता है मोबाइल फेज की पोलैरिटी पे. अगर हम लेस नॉन पोलर सब्सटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इस्तेमाल करते हैं, मसलन हेक्सेन, इससे सिर्फ नॉन पोलर कंपाउंड की मूवमेंट हो जाएगी. मसलन ऑयल्स, फैट्स या इस तरह के नॉन पोलर कंपाउंड्स जो होंगे वो आपके मिक्सचर से मूव होंगे. बाकी कंपाउंड्स जो बेस लाइन से बिल्कुल मूव ही नहीं होंगे. जो ही आप इसकी डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम बना के इसकी पोलैरिटी आप बढ़ाओगे तो इसकी मूवमेंट भी यानी इस सॉल्वेंट जो है वो मूव होगा. volatile organic solvent is preferably used as mobile phase, right? Suppose mobile phases में ये हमारे पास different solvents हैं, इसकी polarity आप देख सकते हैं, right? So we will discuss experimental procedure in our next class, right? Okay, sir. We are using spraying agents there. Any question? सर एक रिक्वेस्ट है. जी जी सर असाइनमेंट चेक करें ना, प्लांट साइंसेस के कुछ स्टूडेंट्स के